In the previous exercise, we have studied the fundamentals of quadratic equations, which were very easy. But now actually we are into the action zone where we will solve the quadratic equations. In the examination also, mostly the question is asked like this only: solve this quadratic equation. Okay. In the word problems, we have to design the quadratic equation and finally solve it. Okay. There are three methods of solving the quadratic equation. First is a factorization method. Second is a method of completing the square, and the third is formula method. Okay, so we are into the first method, that is solve the quadratic equation by factorization method. When we say factorization method, we have to find factors, and finding the factors is the jugglery of tables. So if you are good in tables, you will get the factors very easily. If you are not good in tables, you will have to struggle. You will have to spend more time. So the secret of getting the factors is very good, very sound knowledge of tables. Within fraction of a second, you should get the factors. Okay. So let me explain, and let us start with some examples from the exercise. Okay. So I am starting with practice set 2.2, question number 1, sub question number 1, given on page number 36. The question is this: solve this quadratic equation. In the solution we have written, given quadratic equation is this, given equation number 1. And now let me explain the method. To solve the quadratic equation by factorization method, we have to multiply the coefficient of x square. Nothing is written here. What does it mean? The coefficient is 1. We have to multiply this coefficient with the last constant. Okay. For which, again I am telling you, you will have to rearrange the given equation in the general form. Ax square plus bx plus c equal to 0, in that form. And then the action begins. Okay. So you have to multiply the coefficient of the square term with the constant, and here it will be 1 into 54 equal to 54. And now this is the number which you have to factorize into two factors such that the sum of the factors must be equal to the middle coefficient. We have done this in the lower classes also. So this is not new to you. Okay. It is the revision of what we have done. Okay. Now, this number is a positive number. So its both factors will either be positive or both negative. Because if you multiply both positive numbers, you will get the product equal to positive number. If both the factors are negative, still the product will be positive. The question arises whenever the number which you want to factorize is negative, and there you have to take the precaution. Now, let me start. What is the requirement? We have to factorize the number such that the sum of the factors must be the middle coefficient. Let me take some combinations. Suppose I write 54 ones are. Product is 54. But if I add these two numbers, 54 and 1, I get 55, which is not the required coefficient. So this combination is not acceptable. Let me go to another combination. Okay, 27 twos are. 27 twos are is 54. Okay, if I add, I get 29. This is also not acceptable. I want minus 15. Okay, let me make it minus 27 into minus 2. Product will be plus 54. If I add these two numbers, the total is minus 29. Nahi jamta, because my requirement is the sum of the factors must be equal to the middle coefficient. Ye bhi nahi jamta. Chalo, isko bhi chodo. Then 9 6 are 54. If I add these two factors, the total will be plus 15. Nahi jamta, because I want minus 15. तो क्या होगा? minus 9 minus 6. अब टोटल कितनी आएगी? minus 9 और minus 6 की टोटल minus 15 आएगी. ये acceptable combination है.
डिलिबरेटली मैंने पहले 2-3 कॉम्बिनेशंस रॉन्ग ले लिए. ये क्यों नहीं जमता? टोटल 55 है, हमें कितनी चाहिए? -15. नहीं हो सकता. ये क्यों नहीं जमता? टोटल पहले आ रही थी +29, जब दोनों पॉजिटिव थे तब. दोनों निगेटिव है तो -29, ये भी नहीं जमता, बिकॉज माई रिक्वायरमेंट इज -15. फिर मैंने लिया +9 +6, प्रोडक्ट तो 54 आ रहा, टोटल +15 आ रही, लेकिन मुझे +15 नहीं चाहिए, -15 चाहिए. सो व्हाट आई डिड, आई रोट माइनस हियर, so that -9 into -6 is +54, और दोनों की टोटल करेंगे तो -15, which is my required coefficient. इन दोनों की टोटल यहां आनी चाहिए. ठीक है. So this is the way we apply factorization method. And what do we do with these new factors? We split the middle term. ये बीच वाली टर्म को हम लोग लिखेंगे ये दो नंबर्स को लेकर. यानी कैसे? तो -15x विल बी रिटन एज -6x -9x. अब इसमें से पहला कौन से लिखते हैं और बाद में कौन सा लिखना है, दैट इज योर चॉइस. सो आई रोट -6x -9x. फिर पहले दो को अंडरलाइन कर दो, दूसरे दो को भी अंडरलाइन करो. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स यू गेट x कॉमन. सो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट? x -6. यहां से x गया तो एक x अंदर बचेगा, यहां से x बाहर गया तो -6 बचेगा. सो सिंपल. ये जो ब्रैकेट आती है दैट टेल्स यू व्हाट शुड यू टेक कॉमन फ्रॉम द सेकेंड टू टर्म्स. क्योंकि यही ब्रैकेट इधर आनी चाहिए, ऐसा नंबर हमें कॉमन लेना चाहिए. तो -9 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बचेगा x, एक प्लस यानी दो माइनस, एक माइनस बाहर चले गया, एक माइनस अंदर. 9 6 are 54, -9 माइनस माइनस प्लस 9 6 are 54. तो -9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x -6. You always have to take a number common from the last two term such that this bracket is repeated here. Is that very clear? आखिरी के दो नंबर में से ऐसा नंबर कॉमन लेना पड़ता है कि यही ब्रैकेट यहां आनी चाहिए. ओके. नाउ आई हैव अंडरलाइन द ब्रैकेट, कर्ली अंडरलाइनिंग. ओके. क्यों? क्योंकि अब ये पूरी ब्रैकेट ही मैं कॉमन लेने वाला हूं. सो इफ आई टेक द होल ब्रैकेट कॉमन, ये ब्रैकेट गई तो ये बचेगा x, यहां से ये पूरी ब्रैकेट कॉमन गई तो यहां बचेगा -9. सो यू गेट x -6 इंटू x -9 इक्वल टू 0. इसी को ऐसा लिख सकते हैं. नाउ वी यूज वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ अलजेब्रा. ये एक नंबर है, एक ब्रैकेट यानी एक नंबर, दूसरी ब्रैकेट यानी दूसरा नंबर. ओके. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0. ऐसा कब होगा? दोनों में से मिनिमम एक तो भी 0 रहना चाहिए. आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और द सेकंड ब्रैकेट इज 0. और एक पॉसिबिलिटी भी आती है, दोनों के दोनों 0 रहे तो भी प्रोडक्ट 0 आएगा. लेकिन वो पॉसिबिलिटी हम लोग अक्सर वी यूज इट इन geometry in the higher classes, in the 11th and 12th standard. So in the 10th standard you can say that either the first factor is 0 or the second factor is 0. So in the 10th standard we write or, in the higher classes we will write and also. Okay. So if you simplify, what do you get? X is equal to 6. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इधर जाएगा, x is equal to 9. So 6 and 9 are the roots of this equation. यानी x is equal to 6 अगर आप डालोगे तो LHS और RHS इक्वल आएंगे, x is equal to 9 डालोगे तो भी आपके LHS RHS इक्वल आएंगे. So this is called the factorization method. And what is the fundamental, what is the basic requirement to apply this method? You should be well versed with tables. If your knowledge of tables is very good, you can easily get the factors. Otherwise you will have to struggle. Okay. Then one more equation with the same fundamentals. This is the equation which we have to solve. What is step 1? You have to multiply the coefficient of square term with the last constant term. So 2 into 13 comes out to be 26. Okay, 13 2s are 26. And we have to factorize 26 again in the same manner. Okay, we have to factorize 26 such that sum of the factors must be equal to the middle coefficient. So you can write 13 2s are. Let me do it in the wrong manner. Let me start with the wrong combination. 13 2s are 26. Absolutely right. If I add 13 and 2, I get 15, which is not my required number. I need
आई नीड 27. तो ये जमेगा क्या? नहीं जमेगा. फिर क्या जमेगा? 26 into 1. 26 ones are 26. What is the total? What is the total? 27, which is my required coefficient. बीच वाला नंबर मिलना चाहिए ये दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद. So once your requirement is fulfilled, the factors are such that the sum of the factors is the middle coefficient. Then you have to split that middle number. This middle term you have to split using these factors. So you can write that as 26y plus y. क्योंकि यहाँ y है ना, तो इसको हम लोग लिखते वक्त 27y can be written as 26y plus 1y. 26y plus 1y. Okay? फिर हम लोग पहले दो को अंडरलाइन करेंगे, दूसरे दो को अंडरलाइन करेंगे. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स वेरी क्लियरली 2y इज कॉमन. यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 ले लो. यहाँ y स्क्वायर है यानी y है ही, और यहाँ पर भी y. सो इफ यू टेक 2y कॉमन यू गेट y plus 13. यहाँ पर y plus 13 को सिर्फ ब्रैकेट में डाल दो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस ब्रैकेट इज कॉमन. यहाँ भी है, यहाँ भी, पूरी ब्रैकेट ही कॉमन लेंगे. तो सेकंड ब्रैकेट विल हैव 2y, और यहाँ पे y plus 3 पूरा ब्रैकेट के बाहर चले गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा क्या? नहीं, 1. इसका फैक्टर 1 है ना, तो वो 1 बचेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आफ्टर टेकिंग दिस फुल ब्रैकेट कॉमन, द सेकंड ब्रैकेट विल हैव 2y, और यहाँ पे बचेगा 1. 2y plus 1 equal to 0. Again the product of two brackets is 0. So either the first bracket is 0 or the second bracket is 0. So this gives you y is equal to minus 13, and this gives you, ये 1 इधर जाएगा तो minus 1 होगा, और 2 उसके नीचे, minus 1 by 2. So what will we write finally? Minus 13 comma minus 1 by 2 are the roots of this equation. Quadratic equation 1. ये जो इक्वेशन है इसके ये रूट्स है. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो व्हाट डिड यू स्टडी फाइनली? व्हाट डिड यू लर्न? व्हाट इज द मेन पॉइंट? व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड? टेबल्स. 100 बात की एक बात, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द टेबल. इफ योर नॉलेज ऑफ टेबल्स इज गुड, you will not have any problem in getting the solution by factorization method, and that is exceptionally required. Most important thing to solve the quadratic equation is tables, and it is very frequently required. So everyone is requested to learn the tables before you enter into quadratic equations.